See, profit volume ratio of a company is 50%, which has been given, while the MOS is 40%. If the sales volume of a company is 50 lakh, find out the BEP, that is a break-even point, and the net profit. Now, with this information, first we need to find out the BEP, as they want first the BEP. Now we cannot directly get the BEP, तो directly हमें BEP नहीं मिलेगा, because BEP का formula क्या है? Actual sales minus margin of safety in value. अब हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में नहीं है. वी हैव अ सेल्स वॉल्यूम in the value, but we do not have a MOS in the value. So first we need to find out the MOS in the value, then only we can apply the formula. So what we are doing first, पहले हम MOS in the value calculate कर देंगे. तो हमें ये पता है कि जो भी सेल हुआ है उसका अगर ये 40% है, so 50 lakh का अगर 40% if I do, I will be getting how much? 20 lakh rupees. So now after finding out this, we can easily find out the BEP in the value. Now what is the formula for it? Actual sales in the value minus MOS in the value. Actual sale is how much? 50 lakh rupees. While MOS is how much? We have already find it out from here. 20 lakh. So 50 lakh minus 20 lakh will give me the 30 lakh rupees ka BEP. So break-even point is 30 lakh. Now, next they are asking us to find out the net profit as well. Now we can find out जो भी हमें break-even point मिला अभी. That was how much? 30 lakh. Directly can we take in here? Obviously no. Yes, we can go by the formula. We have a formula that margin of safety, and even in percent sales, when I multiply it by actual sale, and when I take this as a whole and multiply by PV ratio, I will be easily getting the profit. Obviously यहाँ पर direct figure नहीं दिया, that is why we need to apply the formula. अगर direct figure दिया होता तो we could have directly taken it up. वैसे भी हमने यहाँ से find out कर ही लिया है, अगेन करने की जरूरत नहीं है. बट अगर ये 2 marks के लिए if they are asking you to find out the BEP separately and the net profit separately, so you can apply this formula again. So that is why I have written. वरना हमने MOS तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर ही दी थी 20 लाख, तो वी वुड हैव डायरेक्टली टेकन इट. बट अगर ये सेपरेटली आया तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज व्हाई अगेन आई हैव रिटन दिस अप. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है इन दिस इन परसेंट सेल इज 40%. सेल इज हाउ मच? 50 lakh. And we have to multiply this by PV ratio. PV ratio is 50%. So this will be equals to 20 lakh ka 50%, which will be equal to 10 lakh. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, हम डायरेक्टली भी ले सकते थे, बट आई एम जस्ट शोइंग यू के डायरेक्टली इफ इट इज बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, हाउ यू कैन फाइंड इट आउट.